children, today's video will be on finding directions with the help of magnets. Now let us see the activity 4.3. Let us experiment also along with it. क्या कहता है activity 4.3? Suspend a bar magnet with a thread tied to the middle of the magnet as shown in figure 4.5. इस फिगर की बात की जा रही है. सस्पेंड का मतलब आपको हैंग करना है एक बार मैग्नेट विद अ थ्रेड. यू कैन सी दिस इज द बार मैग्नेट विच इज हैंग्ड विद अ थ्रेड हियर. ओके. You may need to adjust the position of the string till the magnet is balanced horizontally. ये मैग्नेट सही से बैलेंस हो जाए इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा. Now rotate the magnet gently in the horizontal direction and let it come to rest. Horizontal direction का मतलब होता है ऐसे हमें इसको रोटेट करना है, मूव करना है ज़रा सा, ताकि और थोड़ी देर बाद छोड़ देना है ताकि ये दोबारा से इसी पोजीशन पे आ जाए. So this is what is called as rotation horizontally. Mark the position corresponding to the ends of the magnet on the ground or on a piece of paper stuck to the ground. There is a piece of paper stuck to the ground और अब हमें इधर इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के डायरेक्शंस को मार्क करने. Join these two points on the ground with a line. This line indicates the direction along which the magnets came to rest. जब हम इस मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव करा रहे थे तो ये कहाँ कहाँ पे आके रुका. देखो जैसे यहाँ एक बार रुका है तो हमें वहाँ पॉइंट्स मार्क करने हैं. This is how we are going to mark the points on a piece of paper which is stick just below the magnet. Now again rotate the magnet by giving a gentle push at its one end and wait till it comes to rest. दोबारा इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है. Does the magnet rest along the same lines? क्या ये मैग्नेट दोबारा से इन्हीं लाइंस पे आके रुकता है? यही हमारा एक्सपेरिमेंट है. Now let us see what does Reshma think about. What directions does the magnet, these lines indicate along which the magnet rests? How can we find it out? If we have noticed the direction where the sun rises or sun sets, we have an appropriate idea where is east and west. You all are aware that sun rises in the east and it sets at the west. तो हमें अगर ये डायरेक्शंस पता है तो हमें मैग्नेट का डायरेक्शन भी इजीली पता चल जाएगा. Hence we can locate the direction along which the magnets are resting. A freely suspended bar magnet comes to rest along the north-south direction. This is a very important line which you need to know. कभी भी कोई भी सस्पेंडेड मैग्नेट मतलब हैंग मैग्नेट होगा वो किस पोजीशन या किस कब रेस्ट पे आएगा? ओनली टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इट कम्स टू रेस्ट. द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन is called the north seeking pole. In my previous video you all are aware what is a north pole and a south pole. तो जब मैग्नेट नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करता है तो हम उसको कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. सिमिलरली ऑन द अदर हैंड द points towards the south direction is called as the south seeking point or the south pole of the magnet. A freely suspended magnet rests along north-south direction because our earth behaves like a giant magnet. This is a question which can be formed बहुत easily कि हमारा two questions can be formed. How does our earth behave? So the answer is earth behaves like a giant magnet. Then the next question can be in the form of a give reason that why does a freely suspended magnet rests along a north south direction. तो इस छोटे से लाइन से देखिए हमने दो questions निकाल लिए. It is a very important
paragraph everybody should read and understand nicely. Repeat this experiment with a small iron bar magnet in place of a bar magnet. What do you observe? Does it always rest along north-south direction? It does not. It can rest along any direction. This implies that only magnets rest along north-south direction. This provides us with a way to test whether a piece of metal is a magnet or not. अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में इस मैग्नेट के अलावा किसी और आयरन मटेरियल को ले लेते हैं, कोई भी आयरन मटेरियल जो कि मैग्नेट नहीं है, तो वो कभी भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता हुआ शो नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ओनली मैग्नेट्स हैव दिस प्रॉपर्टी टू रेस्ट एट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. The property of a freely suspended magnet is or to always rest along the north-south direction is used to find directions. अब देखिए क्वेश्चन फिर बन रहा है. How is a magnet used to find direction? So the property of the freely suspended magnet to always rest along the north-south direction is used to find directions. ये आपका आंसर होगा. Based on this, a small device called magnetic compass was developed in olden days to find the direction. This is the magnetic compass. It has a magnet in the shape of a needle. ये जो needle दिख रहा है आपको, ये actually एक magnet है that can freely rotate. The needle of the magnet compass indicates the north-south direction. ये indicate करता है north और south का direction. The compass is kept at a place where we wish to know the direction. इस कंपस को वहाँ रख देना है आपको जहाँ आपको आपका डायरेक्शन पता करना. आप अपने कमरे में भी रख सकते हो कि आपका स्टडी टेबल कहाँ पे है. अब वहाँ ये कंपस रख दीजिए. ये नीडल पॉइंट करके बता देगा बिकॉज इट इज़ सस्पेंडेड फ्रीली, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे आके रेस्ट करेगा. तो वो आपको बता देगा कि आपके स्टडी टेबल से नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है और साउथ डायरेक्शन कहाँ पे है. आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू रेस्ट in the north-south direction. The compass box is then gently rotated until the north and the south marked on the dial is aligned with the needle. Now all directions at that place are as indicated on the dial. तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे कौन कौन से डायरेक्शंस आप देख सकते हो. नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, this is the south direction, this is south west, this is west, this is northwest, and this is the north direction. This is how you can very well find out the directions with the help of a compass. A compass needle is usually a small circular a magnetic compass is usually a small circular box with a transparent cover on it. The magnet in the shape of a needle is mounted on a pin stand at the bottom of the box. This needle is balanced on the pin in such a manner that it can move around its point easily. That is, it can rotate freely. The end of the needle, which rests in the north-south direction, is usually painted red. Below the needle, there is a dial with direction marked on it. If there is a question that what is a magnetic compass or write a short note on magnetic compass, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि magnetic compass एक small circular box होता है जिसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर है. द मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ नीडल, ये जो पूरा बॉक्स है ये मैग्नेट नहीं है, इसके अंदर एक नीडल है जिसे एक पिन के ऊपर रखा गया है और वो मैग्नेट की तरह काम करता है क्योंकि वो नीडल को पिन के ऊपर रखा गया. जैसे मान लीजिए ये नीडल है, ओके, ये नीडल है और इसको एक पिन के ऊपर रखा गया. जैसे ये पिन है तो ये आराम से मूव कर सकता है, ऐसे फ्रीली रोटेट. दैट इज़ वाई इट कैन इज एबल टू गिव द डायरेक्शन. Now this will be explained in my next video, that how can we make an iron needle into a magnet.
Stay tuned. Thank you.